Students, today we'll start the class for vector and scalar diagrams. Before starting this class, we'll see what is the basic definition or difference between scalar and vectors. You know about scalars are quantities having only magnitude. Magnitude means any numerical value. Like is that if we write it as 5 newtons. So this numerical number, this is actually called magnitude. So such quantities which have only magnitude are called scalars. For example, mass, energy, power, speed, and there are some other example, distance, work, energy, power, temperature. These are supposed to be scalar quantities because they have only magnitude but no direction. The second definition is vectors. Vectors are such quantities which have magnitude as well as direction. For example, vectors includes acceleration, velocity, weight, force, momentum, moment. These are supposed to be vector quantities. Now we see how we can add these two vector quantities. If there are, let's suppose, vector A and vector B are given, so how we can add them? We can add them by two methods. Number one, triangle law of vector addition and parallelogram law of vector addition. First of all, we see triangle law. As you can see, this is the vector A and this is the vector B. Vector is represented by a line with arrowhead. Vector A, the starting point, and this head is terminal point of this vector. It's mean vector A is starting from this and ending to this point. Similarly, vector B starting from this point and ending to this point. Now we want to add them. We will join the final point of vector A to the starting point of the vector B. Similarly, we join the terminal point of B to the starting point of A. So we will get a new line, this red line. This is actually the resultant vector. Resultant vector means combined effect of two vectors. So this new line is represented by A plus B. So A plus B is the resultant vector, and this is the combined effect of two vectors, and this is the first law to add two vectors. This is called triangle law. I repeat it again. In the first step, you will join the head of first to the tail of second, and then head of second to the tail of first. And the new line, this is called resultant vector, and its direction will be starting from the starting point of A to the ending point of B. The second method is parallelogram method. Again, we are having two vectors A and B. We will draw these two vectors and then draw a parallelogram. In the next version, we will see how we will see the steps, how we can draw these parallelograms. Now you have to learn about this. The diagonal of this parallelogram shows the resultant vector. Now we come to the question to understand this concept, vector addition, vector diagram, or addition of vectors. These are three different names for this topic. I repeat it again, vector addition, vector diagram, or addition of vectors. Okay, now we see here, there is a question, number one, state the factors which completely describe a vector quantity. You know, vector quantities having magnitude
magnitude as well as direction. So these are the two properties for a vector. Okay. In the second part, we will see an aeroplane is flying towards the east in still air at 92 meter per second. A wind start to blow at 24 meter per second towards the north. Okay, guys, इसमें सबसे पहले आपने ये देखना है बेटा कि you have to draw a rough diagram. Rough diagram किस तरह से हम draw कर रहे हैं कि again an aeroplane is flying towards east with the velocity is this and then move to the north with this velocity. So you know direction, this is north, east, west, and this is supposed to be south. And these are at angle of 90 degrees. You know about that. These are the four directions. So first of all, we draw a rough diagram, and also in the second step, we draw a vector diagram to find the resultant velocity of the aeroplane. Use a scale of 1 centimeter shows 10 meter per second. So first of all, we see the rough diagram. As an aeroplane moves east toward east, with velocity 92 meters per second, and then move to the north at an angle of 90 degrees. And now the velocity is 24 meters per second. So these are the two vectors. One is 92 meters per second and other is 24 meters per second. And they have angle 90 degrees. Now we are going to draw this diagram with the help of scale, protractor and compass. First of all, we have इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पे स्केल दे दिया गया तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा. लेकिन अगर आपको स्केल नहीं दिया जाता देन यू हैव टू सिलेक्ट द स्केल. लेकिन स्केल आपने इस तरह से सिलेक्ट करना बेटा कि जो भी डायग्राम बने वो एटलीस्ट जो स्पेस गिवन है उसको पूरी स्पेस में तकरीबन बने या उसका 1/3 बने. हाफ उस स्पेस का या उससे कम जो होगा डायग्राम या स्केल जो होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा. उसके नंबर कैम्ब्रिज में डिटेक्ट हो जाते हैं. तो आपने कोशिश करना है कि स्केल आपने इतना बड़ा रखना है कि डायग्राम 1/3 या फुल स्पेस को कवर करें. अब जैसे यहाँ पे एक डायग्राम ये हमारे पास स्पेस गिवन है. सबसे पहले तो हमने स्केल सेलेक्ट किया. तो स्केल सेलेक्ट करने से हमारे पास जो दो क्वांटिटीज हैं 1 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. तो इसका मतलब ये हुआ कि स्केल में स्केल के मुताबिक 24 मीटर पर सेकेंड ये कितनी बड़ी लाइन बन जाएगी अबाउट 2.4 सेंटीमीटर. और 92 मीटर पर सेकेंड की लाइन कितनी बड़ी होनी चाहिए अबाउट 9.2 सेंटीमीटर. बिकॉज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर 10 मीटर पर सेकेंड था. तो इसलिए हमने इसको 24 को 10 से डिवाइड किया और 92 को 10 से डिवाइड किया. तो ये हमारे पास लाइन आ गई. और ये भी देख लें कि 9.2 जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो 2.4 लाइन है वो वर्टिकल लाइन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक अ स्केल. मीटर रूल लेंगे आप. आपने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है स्केल की मदद से 9.2 सेंटीमीटर. फिर उसके बाद प्रोटेक्टर यूज करना है. प्रोटेक्टर आपने ऐसे यूज करना है कि ये आपने प्रोटेक्टर इस तरह से रखा है. इसके ऊपर ये आपका 90 एंगल यहाँ पे बन रहा होगा. और यहाँ पे आपने लाइन कितने सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है दिस वन 2.4 सेंटीमीटर. ये एक लाइन आपने यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर की स्केल करना है. और एंगल इसमें क्या बन गया आपका 90 एंगल.
ये तो वो डायग्राम है या जो अभी तक हमने सिर्फ स्टेटमेंट से लेके इंफॉर्मेशन लेके ड्रॉ की है। अब हम इसको रेक्टेंगल को कंप्लीट करते हैं। अब आपने यू विल पुट द पेंसिल इनसाइड द कंपास और उसको ओपन करना है 9.2 सेंटीमीटर। ये बात दोबारा सुन लीजिए। कंपास में पेंसिल आपने एडजस्ट करनी है और उसको आपने 9.2 सेंटीमीटर ओपन रख के यहाँ पे कंपास को रखना है, इसकी नीडल को, और एक आर्क यहाँ पे लगा देंगे। 9.2 सेंटीमीटर ओपन किया और 2.4 के हेड पे रख के आपने आर्क लगा दी। देन यू विल ओपन 2.4 सेंटीमीटर और जो इस पोजीशन पे आपने कंपास को रखना है और एक आर्क लगा देंगे, लाइक इज दैट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा सुन लें। 9.2 सेंटीमीटर ओपन किया, 2.4 के हेड पे रख के एक आर्क लगाई, फिर उसके बाद 2.4 ओपन किया और यहाँ पे रख के एक आर्क लगाई। देन यू विल ज्वाइन दिस, यू विल सी कि एक रेक्टेंगल आपके पास बन गया। अब आपने करना क्या है कि इसका डायगोनल बनाना है। डायगोनल आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से टू द हेड ऑफ सेकेंड। ये जो आपके पास डायगोनल आएगा, इसकी लेंथ आपने स्केल से मेजर करनी है। ये लेट्स सपोज हमारे पास आ जाती है तकरीबन 11 सेंटीमीटर या जो भी आपकी आती है। इसको हम वर्किंग स्कीम से चेक कर लेते हैं इसको। अच्छा, इसमें रिजल्टेंट हमारे पास आ रहा है तकरीबन 94 to 96 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि ये जो हमारे पास आएगी लेंथ, ये तकरीबन अगर हम इसको यूज कर लें ये हमारे पास आ जाती है 9.5 सेंटीमीटर। तो रिजल्टेंट हमारे पास आ गया 9.5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि आंसर मीटर पर सेकंड में था, क्वेश्चन जो था वो मीटर पर सेकंड में था, वेलोसिटी दिस वन, और हमने स्केल सेलेक्ट करके इसको कन्वर्ट किया था सेंटीमीटर में। तो अब दोबारा सेंटीमीटर से मीटर में लेके जाएंगे, मीटर पर सेकंड में। तो इसको हम दोबारा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर था? 10 मीटर पर सेकंड के। तो फिर ये रिजल्टेंट हमारे पास आ जाएगा 9.5 मीटर पर सेकंड। दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी। And now we see the angle. Angle is about angle between resultant and easterly direction. Easterly direction हमारे पास ये आ रही है। You have to find this angle. ये भी आपने यहाँ पे प्रोटेक्टर रखने इस तरह से, और ये एंगल आपने मेजर करना। ये अबाउट एंगल आ जाएगा आपके पास 13.5 to 15.5। वी सपोज इट, ये हमारे पास स्केल जो है आगे जाएगा तकरीबन 15 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट। Calculated unit penalty is 13.5 to this one, as you can see this. So this is the vector diagram. मैं अभी इसका एक क्विक ओवरव्यू आपको दोबारा दे देता हूँ। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या किया कि आपने स्केल जो सिलेक्ट था उसके मुताबिक क्वांटिटीज को कन्वर्ट किया। 24 मीटर पर सेकेंड को 2.4 सेंटीमीटर में, 92 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी को 9.2 सेंटीमीटर में,
because scale was given 1 centimeter is supposed to be 10 meter per second. Then second step में आपने 9.2 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, फिर उसके बाद 2.4 सेंटीमीटर वर्टिकल लाइन बनाई और प्रोटेक्टर रखा आपने 90 के एंगल पे। उसके बाद आपने कंपास ओपन किया 9.2 सेंटीमीटर का और 2.4 के हेड पे रख के एक आर्क लगा दी। Then you open 2.4 centimeter compass and put starting point of 9.2 or second arc लगा दी. Where these two are cut, you will join this, you will get a rectangle. Then you will draw the diagonal and measure the length of the diagonal. It's about 9.5 centimeter and 1 centimeter, 10 meter per second. So according to this, 9.95 meter per second is the magnitude of the resultant speed. Then you will find the direction with the help of the protector towards east, this about 15 degree. So these are the some steps you have to follow to draw the diagram, vector diagram.